Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोइंग एस्केलेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट हम पहले बात कर चुके हैं, हमने पहलगाम इंसिडेंट की बात की थी और उसके हवाले से बात की थी, और फिर हमने उसके हवाले से जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इम्पैक्ट आया और उसके जो इंडिया ने सस्पेंशन की उसके ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इस पॉइंट के ऊपर जो एस्केलेशन हो रही है और जिस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग काइंड ऑफ रेट्रिक इंडिया की तरफ से आ रहा है, और उसको एक्सप्लेन करेंगे। और हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे: वाई इंडिया इज़ बिहेविंग द वे इट इज़ बिहेविंग, उसकी जो एस्केलेशन वाली जो टोन है, वाई इट इज़ सो, और बिसाइड्स दैट हम देखेंगे पाकिस्तान का जो रिस्पांस है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि पोटेंशियल फॉलोअप क्या हो सकता है कमिंग डेज़ और वीक्स में, और जो फॉलोअप हो सकता है इंडिया की तरफ से जो मिलिट्री एडवेंचर के थ्रेट किए जा रहे हैं, और तो वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं और उसके होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं और उसके अंदर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन, नाज़रीन आपको स्क्रीन में नजर होगा, दिस इज़ अनदर बैच ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th of May 2025। नेक्स्ट मंथ में शुरू होगा आफ्टर 10-15 days. This program, like previous programs, will be covering all important topics of current and Pakistan affairs comprehensively, and for more details you can contact on the given number. Besides that, there's a mock test series to judge where you stand in your preparation for current affairs, Pakistan affairs, international relations, as well as political science, and you can get yourself registered for that mock exam series as well. अब आते हैं नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान जो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर बात करते हैं। हम जानते हैं, उसका बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ था लास्ट ट्यूसडे को, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान। इनफैक्ट सम ऑफ द इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैव स्टेटेड दैट देयर वर 4 मिलिटेंट्स इन्वॉल्वड इन द अटैक, 3 of them वर एक्यूज्ड टू बी फ्रॉम पाकिस्तान। तो उस हवाले से उसको इल्ज़ाम लगा के, पाकिस्तान की सपोर्ट को इल्ज़ाम लगा के इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में एस्केलेशन हुई है, और उसके अंदर 5 prong जो स्ट्रेटजी थी मोदी साहब की, जो रिस्पांस आया उसके ऊपर हमने बात पहले कर चुके हुए हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि 2 दिन पहले बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर भी क्लैशेस हुए बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियाज़ मिलिट्री। अब नाज़रीन ऑब्वियसली बात है, ये एस्केलेशन चल रही है। इंडिया का मीडिया जो है वो लार्जली होस्टाइल है, पब्लिक ओपिनियन बड़ा होस्टाइल है। हमने देखा कि दुनिया भर में इंडियन जो डायस्पोरा है उन्होंने मुजाहरे किए हैं, और एक काइंड ऑफ क्लैश जो है वो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के सपोर्टर्स का, पॉपुलेशन का भी। और लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देखा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इट इज़ प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर येट अनदर मिलिट्री एस्केलेशन। जैसे मोदी साहब ने कहा था कि वी विल रिटेलिएट अगेंस्ट सच काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स एंड वी विल नॉट लीव देम। तो देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ escalation, military escalation along international border as well as the LOC between Pakistan and India. This seems to be the repetition of what happened in 2019 or what happened in 2016 or even what happened before that as well. So अब नाज़रीन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं that why Indian government has taken steps that are unprecedented in India-Pakistan relations। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की जा रही है, which is something जो कि पहले कभी नहीं हुआ, डिस्पाइट 65 की वार हुई, 71 हुई, कारगिल वार हुई, मुंबई अटैक जैसा बड़ा हमला हुआ, उसके बावजूद इंडिया ने इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा। बट अब क्यों किया? इसी तरीके से पहले ये बात होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती थी, बट अब इंडिया के अंदर बड़ा पब्लिकली, और मैं मिसाल दे सकता हूँ, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो सीरियस एनालिस्ट हैं, इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इंडिया टुडे ने पूरा एक फीचर लिखा है इसके ऊपर, there is a possibility of a limited war on the pattern of the cold start doctrine that India developed in the post Mumbai attack scenario। तो उस तरह की पॉसिबिलिटी की बात भी की जा सकती है। तो ये जो एस्केलेटरी कॉन्फ्लिक्ट है, दैट वंस दिस कॉन्फ्लिक्ट अब सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय नेक्स्ट स्टेप पे जाने की बात की जा रही है, ये इतनी एस्केलेशन क्यों है? Why India is behaving the way it is behaving? There are multiple explanations to the Indian aggressive rhetoric. उनमें से अगर वन बाय वन बात करूँ तो सबसे पहला आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है खासकर इंटरनेशनली, दैट इज़ पॉपुलर प्रेशर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक पब्लिक का प्रेशर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ फॉर ईयर्स boosted the public morale by saying that India is invincible, India is a global power, India is so strong, so powerful, मेक इंडिया ग्रेट अगेन की डिबेट थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का जो हमला होगा तो इंडिया हैज़ मोदी साहब को अपनी पब्लिक को
impact दिखाना पड़ेगा, that if he was saying that India is great, then show that India is great. So it is public pressure that is driving Modi to act the way he is acting against Pakistan, or the way he is threatening Pakistan in this context. So ये जो रेटरिक था ओवर द ईयर्स, उसको सबूत के तौर पर ये एक एस्केलेटरी टेंशन पाकिस्तान के साथ डेवलप की जा रही है. सेकेंड रीजन इज पोलिटिकल इंटरेस्ट. Definitely, Prime Minister Modi has political interest as well. Politically speaking, Prime Minister Modi जो हैं वो अपनी power drive करते हैं Hindu nationalist से, and because this attack was carried out a targeted strike, targeted attack, पहलगाम का जो हमला था, it was a targeted attack against the non-Muslims. Therefore, it fits into the very narrative of the BJP, and in order to strengthen its base in Kashmir as well as across India, Modi has to show that he is more aggressive, particularly when the targets are specifically non-Muslims and particularly Hindus. So because this is taken as a sectarian and communal kind of attack by the Indian media, therefore Modi has an ample opportunity to build on and to strengthen his political base. And because this happened in Kashmir and Modi sahab lost the elections in Kashmir, he could not get the kind of majority that he used to get previously in Indian election 2024. Therefore, this provides him an ample opportunity to regain the lost political base. Another factor जो नाज़रीन इंपॉर्टेंट हो सकता है वो इकोनॉमिक भी है, बिकॉज हमने देखा कि मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनमें से एक जो पॉलिसी थी दैट वाज मेकिंग इंडिया अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट ग्लोबली. And making India to a hotspot would mean that Kashmir would have a pivotal role to play. And from Modi's policy perspective, जब 2019 में आर्टिकल 370 और 35A रिवोक भी किया गया था, एम यही था कि कश्मीर के अंदर जो है वो नॉर्मलसी लाई जाए और वहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया जाए ताकि सोशल चेंज आए इन फेवर ऑफ इंडिया, इंसर्जेंसी को काउंटर किया जाए. और उस हवाले से ये जो अटैक था पहलगाम का, दिस नॉट ओनली हैड सिक्योरिटी लैप्स इम्पैक्ट, बट इट ऑल्सो हैड एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिकॉज इट वुड significantly deter tourists from visiting that part of the region, and particularly those from abroad as well as from the main India. उससे जो टूरिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली हार्म होगी. एंड बिकॉज टूरिस्ट सीजन इज़ कमिंग इन कमिंग मंथ्स एंड वीक्स, देयरफॉर वो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ है. बट टू शो दैट इंडियन गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट डिटरिंग सच काइंड ऑफ अटैक्स, इंडियन रिटेलिएशन एंड एग्रेसिव एटीट्यूड इज एसेंशियल, एंड इट विल to some extent calm the Indian public that the region is safe and the Indian government stands with them. Indian government is willing to use any means possible to protect the security, protect and secure the tourist in that part of Indian occupied Kashmir. Another factor is geopolitical. Indians believe that, a lot of experts believe that India has to show that it is a regional, if not global leader, and any attempt to harm India, whether intentionally or unintentionally coming from another side of the border, is likely to get punished. In other words, India has to establish its hegemonic credentials in this region, and to do that, it has to act irrespective of whether Pakistan has offered the independent investigation backed by the Chinese as well as many other independent experts. India, despite that, has to retaliate in order to make sure that it acts and behaves the way hegemon behaves, and not a benevolent hegemon, rather an aggressive hegemon. So this would be a test case for Indian Modi's ambitions to become a global leader, or at least the regional hegemon in this South Asian region. अब नाज़रीन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे आते हैं. दैट पाकिस्तान का जो रिस्पांस अभी तक है उसको हम एनालाइज करें तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इन द इनिशियल कपल ऑफ डेज पाकिस्तान वाज अनएबल टू हैव a quick response to the Indian aggression, maybe because we were unprepared for such kind of scenario, which is yet another indication that Pakistan had no direct involvement of such kind of activity in Kashmir, Indian occupied Kashmir. But जो initial एक दो दिन के बाद हम देखा कि जब तीसरे दिन जाके हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स हमने देखा कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सनस हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हों या बाकी मिनिस्टर्स हों, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ टू respond to India. So I think initially Pakistan wasted a couple of days in preparing for its response. The meeting should have taken place, or at least if not publicly, they should have been taking place. A response should have been prepared
on the day of this incident, because from the few hours after the incident, Indian media started blaming Pakistan, and Indian media always follows the direction of the Indian government. So Pakistan lacked the quick response. We did respond, but quick response, which I think was one of the reasons why first Indians gave briefings to the international diplomats, and then Pakistan followed the suit. We should have been proactively involved and immediately reached out to the international media, and international diplomacy should have been conducted much earlier. कल हमने देखा कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात हो रही थी, ईरान के साथ भी हमारी बात हो रही थी, टर्की के साथ भी हमारी बात हो रही थी, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी. बट दीज नेगोशिएशंस शुड हैव बीन एंड टॉक शुड हैव बीन टेकन प्लेस अ फ्यू डेज अर्लियर इन ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट एनी इंडियन डिप्लोमेसी. इंडिया ब्रीफ चाइना much earlier than Pakistan briefed China officially, and this is something that should have been taking place later on. But again, I'm saying this is a clear indication that Pakistan was not prepared for such kind of happenings in our region, and we never expected that Pakistan would be dragged into such kind of unrelated incident that has nothing to do with Pakistani state. But this is a lesson for Pakistan as well, that in future we must expect anything from India, and therefore our foreign office, our different governmental institutions must be fully prepared for eventuality of this kind, and they must have a kind of a model developed how to respond to such situations, and in the initial response what should be the steps, and depending upon how India moves, what could be Pakistan's responses to India's allegations. So we need to have kind of a prepared models through which we can respond to such kind of behaviors, not just from India, but later on in future it could be Afghanistan, it could be Iran, because Iran से भी हमेशा पाकिस्तान में पहले स्ट्राइक हो चुकी हैं. तो इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए Pakistan's foreign office should always have a prepared model which could be modified according to the developing situation. But later on, once the confusion was over, Pakistan made very clear remarks. Obviously, Pakistan के रिस्पॉन्स में जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो न्यूक्लियर डिटेरेंस का बड़ा विजिबल और वाजे ऐलान था जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, एंड देयर वर टॉक्स ऑफ ब्लॉकिंग पाकिस्तान वाटर्स, जिस पे हम बात कर चुके हैं. तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एक बड़ा क्लियर स्टैंड था दैट इफ इंडिया ब्लॉक्ड और डाइवर्टेड पाकिस्तानी रिवर्स इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके लिए न्यूक्लियर डिटेरेंस इज नॉट ऑफ द टेबल. This is something that is a very clear crystal position of Pakistan that has taken place. But having said this thing, उसके साथ हमने कहा कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव अब पाकिस्तान ने शुरू की हैं पिछले 2-3 दिनों से. वी हैव अप्रोच द इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स, जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में. वी हैव बीन कॉन्टेक्टिंग टेलीफोनिकली विद डिफरेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दिस इनिशिएटिव इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट बट वेरी इंपॉर्टेंट वन. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्स वाज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी दैट ही इज़ विलिंग टू गो फॉर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो. बिकॉज और उसमें हमने कहा कि रशिया की मदद ली जा सकती है, चाइनीज़ की मदद ली जा सकती है, रशिया कुड बी अ म्यूचुअल पॉइंट इन दैट वाज वे. अरब स्टेट्स की जो है वो रोल प्ले किया जा सकता है उसमें जाके. ईरान कुड प्ले अ रोल. इवन हमने कहा वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया के ज़्यादा करीब हैं आजकल, उनकी भी मदद से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है हम उसकी डिमांड करते हैं और उसके लिए कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं. I think this has significantly strengthened Pakistan's case because India would no longer be saying that Pakistan is non-cooperative. Pakistan is willing to cooperate. Now the ball is in India's court, although India has officially rejected it, but this has weakened India's stance because independent investigation is something that could ultimately help bring forward the truth between India and Pakistan. So in this context, I think this investigation followed initially by a different one, because I think ये जो पाकिस्तान की ऑफर थी, this became apparently paradoxical to what Pakistan said earlier. हमने पहले जब कहा कि ये false flag operation है, और जब उसे false flag operation कहेंगे फिर independent उसकी बात करेंगे तो apparently contradiction लगेगी. Although from our stance point of view, it is not contradiction, because we believe that if there is independent investigation, it will expose the false flag operation on the part of India. And Indian rejection of this offer will also mean that India is hiding something. Therefore, पाकिस्तान का ये आर्गूमेंट जो है ये apparently तो strong है, but internationally the way the world environment is against terrorism, I think this first saying it's false flag and later calling for independent investigation, this should have been the other way around. Pakistan should have been calling for international independent investigation and then saying because India refused, therefore we believe that this is a clear indication that it's a false flag operation. But the order of the events should have been the other way around. But Prime Minister साहब की तरफ से जो statement आई, it was a bit late, but it was very important, and so far it's the most effective response that Pakistan could give to India international diplomatic forums के ऊपर.
Nothing what can happen in the coming days and weeks between India and Pakistan, in addition to what India has already done, जो मैं 5-pronged strategy बता चुका हूँ, उसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है? Considering that what happened in the last 2 times, 2016 and 19, 2016 में उरी अटैक हुआ, 19 के करीब इंडियन सोल्जर्स मारे गए, उसके बाद इंडिया ने क्लेम किया that they have conducted commando style strike in Pakistan, a commando action inside Pakistan, Pakistan's Azad Jammu and Kashmir. But we deny that this kind of surgical strike or this kind of commando operation ever happened. India claimed that it was a surgical strike day. We believe it never happened in Pakistan. Later on in 2019, इंडिया ने फिर एयरफोर्स को यूज़ किया एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर, और वी रिटेलिएटेड. तो एक एयर स्ट्राइक जो थी, दैट वाज द केस इन 2019. Both times, 2016 हो या 19 हो, India claimed to have launched attacks in a limited territory within the LOC, और वहाँ पे जो हमला किया गया, that was what India did at that time. However, at this time, there are 2 potential debates within India. How could India militarily respond to Pakistan? There are multiple options that are given, but उनमें से जो 2 prominent हैं, मैं आपके सामने रखूँगा. India Today ने तो 9 different scenarios रखे थे, but मैं उसमें से सिर्फ 2 आपके सामने रखूँगा. One of them is that India should again launch a surgical strike, a kind of either commando-based operation inside Pakistan's LOC or across the LOC, or using a kind of surgical strike. However, in the case of surgical strike by Air Force, the possibility is that Indian Air Force could penetrate deep inside Pakistan's territory, but this deep penetration inside Pakistan's territory could be a huge risk. Therefore, the possibility of using Air Force is minimum, and if India decides to go deep inside Pakistan, the possibility of missile strikes is very significant, and considering Pakistan has a weak air defense systems, therefore वो जो possibility है उसकी chances ज़्यादा हैं. But using the missile systems inside Pakistan could also create more dangers of escalation, because any misdirected missile strike could trigger a wider conflict, which India and Pakistan both want to avoid at this point of time. But there's a second scenario as well besides surgical strike, and that is that a limited war की जाए on the pattern of the cold start doctrine, जो हमने पहले बात की थी, और जिस तरीके से इंडिया टुडे ने कहा that there could be a possibility of capturing the villages on international border inside Pakistan, and probably the territory in the south, जहाँ पे जो इंडिया का राजस्थान है उसके अक्रॉस में जो पाकिस्तान का साउथ पंजाब आता है और जो सिंध इलाका है, वहाँ पे एक limited territory, a few kilometers of territory should be occupied, because there is no population over there, and occupying territory could be used as a leverage, as a bargaining chip to threaten Pakistan, to deter Pakistan. So it's the implementation of a cold start doctrine, a limited war की भी limited implementation की बात की जा रही है. That is where the real danger comes, because from Pakistan's perspective, any occupation of the Pakistan's territory is likely to be not accepted by Pakistan, and it would likely to have a Pakistan's response, and any military retaliation by Pakistan to retake the territory is again something that could spiral the conflict beyond the control of both states, something that both states as well as the international community avoids. But if India goes for occupying a territory, this will be the most significant escalation since 1971, जब East Pakistan was lost. But we must know that after the loss of East Pakistan, we had a very famous statement from Zulfikar Bhutto: we will eat grass, but we will make the bomb. But even if the bomb is unable to protect the land that Pakistan has, then there will be a question on having nuclear weapons. Therefore, any occupation, how small a territory is on Pakistan's side of the international border, is likely to trigger a significant nuclear threat never seen by the world since 1962 Cuban Missile Crisis. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.